Hello, good evening everyone. I'm audible to you all. Please let me know in the chat box. Today we are starting with very important chapter from the geometry, which is nothing but circle. As we have for few questions related to triangle रहेगा या फिर surface area वॉल्यूम रहेगा जो आप 9th पे पढ़ने वाले हो एंड उसी का नेक्स्ट लेवल आपको 10th में भी पढ़ना है तो सिमिलरली आपके लिए सर्कल भी उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे ओके 9th में जो भी कुछ आप ये रिजल्ट देखने वाले हो इसमें से रिजल्ट आपको 10th को यूज करना है सो अच्छे से करेंगे स्टार्ट करें but before that, just let me know am I audible to you or not? Okay. Yes, फटाफट से बोल दो आवाज आ रही है मेरी fine. So as I told you, today we are starting with the new chapter circles. Circle is nothing but this type of figure. Now आपको सिर्फ ये सर्कल ड्रॉ कैसे करना है. In this chapter, we are studying with few important formulas, very important result based on this circle. But first thing is that what is the actual circle? अगर आप कुछ डे टू डे लाइफ वाले केसेस कंसीडर करोगे ये इस टाइप का कुछ आपको मिलेगा करेक्ट समझ में आ रहा है बट इसमें से आप सिर्फ सर्कल किसे बोलोगे देखो ये सर्कल मतलब राउंड वाला कुछ बट राउंड वाले से आपके पास अभी फोर फिगर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक्चुअल में आपका सर्कल रहेगा कौन सा कंसीडर करोगे इसमें से ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ 3D फिगर हम अभी 9th के लिए सिर्फ 2D फिगर वाला ही सर्कल देखने वाले थे करेक्ट सो ये तो नहीं हो सकता सिमिलरली कॉइंस का भी नहीं बोल सकते आप बिकॉज ये आप मिलेंगे नॉट एग्जैक्टली फॉर 2D सर्कल फॉर दैट डेफिनेशन आपका क्या रहेगा सर्कल का ये सबसे पहले चेक करो सर्कल इज नथिंग बट ये जो आपके पास रहता है सेंटर अ सर्कल विथ सेंटर ओ a circle with center O is nothing but set of all points. A circle is nothing but set of all points which are equidistant from this point. Which are equidistant from this point. See, can any set of this point in a plane known as a circle? इसे आप क्यों बोलोगे बिकॉज ये जो सेंटर पे आपको ओ मिल रहा था इस ओ से ये सारे पॉइंट्स आपके इक्वी डिस्टेंस रहेंगे ईच ऑफ दिस पॉइंट satisfies a condition that distance between O to this point is same. आप ओ ए कंसिडर करो 4 सेंटीमीटर मिलेगा चाहे तो ओ बी कंसिडर करो अगेन वो भी आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा चाहे तो ओ सी कंसिडर करो एंड सिमिलरली फॉर मेनी मोर पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल बिकॉज यहाँ पे आप सर्कल कंसिडर करने वाले हो ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हेंस we can say that circle every point on this circle is equidistant from origin is equidistant from the origin. Okay, समझ में आ रही है? We can say that OA is same as OB is same as OD and so on. ये जो fixed distance आप बोलते हो, that fixed distance is known as radius. The fixed distance is known as radius here. So ऐसे कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे? जैसे कोई एक सेम डिस्टेंस दिखाई देगा हाउ मेनी सच रेडिया कैन वी ड्रॉ इन दिस सर्कल जितने आपको दिखाई देते कई नहीं ज्यादा आप केस कंसीडर कर सकते हो देयर विल बी इनफाइनाइट हियर फॉर ईच एंड एवरी सपोज
We are considering 2 points. We are considering two distinct points on that circle, which is nothing but C and D. Which is nothing but C and just a second. Yes. Now we'll consider two distinct points on the circle, which are nothing but C and D. सो आपको क्या मिल रहा था देखो, अगर आप ये दो पॉइंट करते हो ज्वाइन, देन इट इज नोन एज अ सेगमेंट. ये जो सेगमेंट आपको मिल रही है, जो आप ज्वाइन करने वाले हो दो पॉइंट ऑन दिस सर्कल, देन इट इज नोन एज अ कॉर्ड. A segment joining two distinct points on a circle is known as a chord. Then again, ऐसे कितने आपको chords मिलेंगे? Infinitely, because इस circle infinite points रहेंगे, ये आप consider करने वाले हैं, correct? Now again, consider one of the segment PQ such that P and Q should be on that circle. P and Q should be on that circle, and it must pass through the origin. It must pass through the origin. मतलब आपके पास जो कॉर्ड रहेगा वही आप कंसीडर करने वाले हो, बिकॉज कॉर्ड इज नथिंग बट आप ये डिफाइन कर रहे थे जो भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन सर्कल आप रहेंगी वो सिर्फ आप ज्वाइन करने वाले हो. बट यहाँ पे ये जो कॉर्ड क्यों आप कंसीडर करने वाले हो, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. It is passing through the origin. Such a chord is known as a diameter. Such a chord is known as a diameter. A chord passing through center of the circle is called diameter. इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको वन मार्कर के लिए पूछे जा सकते हैं. Okay? Again, there will be infinite diameters. Now, the first theorem of this chapter. There are many more theorems, there are many more important results जो आपको 9th as well as 10th के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी. उसमें से फर्स्ट में क्या है देखो, equal chords of congruent circles, equal chords of a congruent circle subtend equal angles at the center. equal chords का मतलब क्या है? सबसे पहले chord का मतलब क्या है? Chord is nothing but you are just joining two distinct points on this circle. You are just joining two distinct points on this circle, right? Question. The given case there will be two equal chords, means we can say that AB equals to C. Now, subtend of a congruent circle. Congruent circle आप कब बोल सकते हो? अगर ये सेम मिलता है तब से angle subtended by chord AB at the center. ये आपको क्या मिलेगा देखो, एंगल सबटेंडेड एट द center जो आप कंसीडर करने वाले हो, इट इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस. तो ये जो एंगल रहेगा वी कैन डिफाइन इट एज एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी सिमिलर दिस सेकंड जो आपने सर्कल कंसीडर किया है वहां पे जो आपको एंगल मिलेगा सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD, वो आप डिफाइन कर सकते हो CPD से. वो आप डिफाइन कर सकते हो एंगल CPD से. तो क्या करना है आपको, दैट ये जो आप लेने वाले थे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब ये जो भी कुछ आप टू गर्ल्स कंसीडर करने वाले हो उसका मेजर सेम रहेगा. ये ऐसा कुछ आपका डेफिनेशन. फॉर प्रूविंग एंगल्स इक्वल क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है. एंड इस टाइप के कई क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जब हम ट्रायंगल, करेक्ट. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कौन से मिलेंगे एंड सो ऑन. बट ये क्लियर हो रहा था, समझ में आ रहा है. कॉन्ग्रुएंट सर्कल आपके पास है, इट मींस दैट उसका जो भी रेडियस रहेगा दैट रेडियस विल बी सेम. ओके, तो सिर्फ आपको ये जो ट्रायंगल्स मिल रहे थे AOB एंड CPD इक्वल रहेंगे, ये फिल करना है. कर सकते हो क्या? देखो आपके पास कौन से ट्रायंगल्स है,
in triangle AOB and CPD, in triangles AOB and CPD, obviously अगर आप congruent circles के बारे में बोल रहे हो मतलब सर्कल के लिए रेडियस रहेगा सेम, so we can say that here AO is same as CP, then और एक चीज क्या रहेगी, again OB is same as PD, and given part is that there are two chords which are equal in length, मतलब AB is same as CD, AB is same as CD, ऐसे कुछ आपको मिलने वाला है. So we can say that in the given triangle AOB and CPD, AO equals to CP, BO equals to DP, and AB equals to CD. So now we have such two triangles जहाँ पे आपको each and every pair equivalent मिल जाएगी. So we can say that by SSS criteria, given two triangles are congruent. अगर दो ट्रायंगल आपके पास रहते हैं congruent, then using corresponding parts of congruent triangles are congruent, or simplicity, we can say that angle AOB is same as angle CPD. Angle AOB is same as angle CPD. Okay, is that what is getting this one? समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है देखो, इफ chords of congruent circles, सिर्फ हम opposite inverse part प्रूव करने वाले थे. if chords of congruent triangles, chords of congruent circles subtend equal angle, मतलब ये अगर आपके पास रहते हैं chord, तो आप ये जो भी कुछ सब करने वाला एंगल कंसीडर करोगे, फर्स्ट सर्कल के लिए आपको मिलेगा AOB, सेकंड के लिए आप कंसीडर कर सकते हो CPD. गिवन केस क्या है आपका, दैट ये जो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहा है उन दोनों सर्कल का रेडियस से मैं फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स, मतलब AOB एंड CPD जो आपको दिखाई दे रहा था उसके लिए इट विल बी ऑफ इक्वल मेजर. तो फिर आपको प्रूव क्या करना है, दैट chords विल बी इक्वल, मतलब AB एंड CD का वैल्यू सेम रहेगा, ये आपको प्रूव करना है. ओके, गिवन पार्ट इज दैट triangle AOB equals to CPD. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैसे है दैट आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब रेडियस से मिलने वाले थे. आपको प्रूव करना था दैट टू chords विल बी ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब AB equals to CD, ये आपको प्रूव करना है. See, in triangle AOB and CPD, in triangle AOB and CPD, AO equals to CP, there is nothing but radius of two congruent circles, as well as given part is that AOB equals to CPD. ये तो given part था. And जो आपको ये एक और साइड मिल रही थी, corresponding sides of these two triangles, OB equals to PD. Again, the reason will be radii of two congruent circles. Radii of two congruent circles. So using sine, angle, side, that is SAS criterion, we can say that triangle AOB is congruent to triangle CP. एक बात, अगर आप ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हो तो जो आपको प्रूव करना है सिर्फ CPCT का यूज करो, corresponding parts of congruent triangles. That is, we can say that AB equals to CD here. Corresponding parts of congruent triangles are equal. AB equals to CD. Done with this? समझ में आ रहा है? हमने दोनों भी कैसे प्रूव किए, क्लियर हो रहा था आपको, सिर्फ आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कर देते. फर्स्ट केस में आपको ये गिवन था दैट chords आपकी इक्वल लेंथ रहेंगी तो फिर एंगल सेम रहेगा, ये आपको प्रूव करना है. यहाँ पे सिर्फ हमने उसका इनवर्स पार्ट कंसीडर किया. ओके, अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आपको कई बार यूज करना पड़ता है. सी, a perpendicular drawn from the center of the circle to a chord bisects the chord. chord मतलब क्या है, chord से रिलेटेड ये जो हम थ्री थ्योरम देखने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको यूज भी करने पड़ते हैं एंड इसके लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सी, perpendicular drawn from the center to chord circle bisects the chord, मतलब आप अज्यूम करो दैट हियर PE
perpendicular to AB. If PE is perpendicular to AB, then आपको prove करना है just because of this point E will work as a midpoint of this segment AB. E will work as a midpoint of the segment AB. That is AE equals to EB. AE equals to EB. In a circle with center P, in a circle with center P, PE perpendicular to AB, PE is perpendicular to AB and ये जो आपका दे रहा था यहाँ पे A dash E dash ये ऐसा हो जाएगा आपका केस। प्रूव आपको करना है AE equals to EB। जो भी कुछ हम तक जो भी कुछ कर रहे हैं जस्ट यूज दैट जो भी आपके पास है उससे अगर आप ट्रायंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये करो। अगर आप इजीली जो भी दिखाई दे रहा है वहां पे ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो तो वो चेक करो सो दैट ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करना है इसके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड अगर आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये प्रूव कर सकते हैं तो सीपीसीटी का यूज करके जो भी रिक्वायर्ड को प्रूव करना है ये इजीली कर पाओगे। ओके सो नाउ ये जो आपको मिल रहा था यहाँ पे अगर आप कल कंसिडर कर रहे हैं तो क्या कंसिडर करोगे यू जस्ट हैव टू जॉइन PA एंड PB करेक्ट विल जस्ट जॉइन PA एंड PB just drop EA and so now I can see there are two triangles the first one is PEA and the second one is PEB so now we have two triangles such that PA PB is nothing but radius of the same circle रेडियस ऑफ द सेम सर्कल अगर रहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लेंथ सेम ही मिलेंगे सेकंड थिंग पीई ये जो आपको मिल रहा था इट विल बी अ वन करेक्ट कॉमन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स ये समझ में आ रहा है एंड ये परपेंडिकुलर ही आपके पास है मतलब ये अगर रहता है 90 देन ऑब्वियसली ये आपका ही रहेगा सो we'll just go through it in triangle PEA in triangle PEA and PEB it is a perpendicular one so measure of angle PEA equals to measure of angle PEB is equal to 90 degree then opposite to this ये जो radius of the same circle आप consider करने वाले हो PA equals to PB but अगर आप right angle triangle के बारे में बोलो then it will work as a hypotenuse so hypotenuse PA equals to hypotenuse of PB hypotenuse PA equals to hypotenuse PB and PE is a common side for that so PE equals to PA so 90 degree है hypotenuse है and कोई side आपकी same है so we can say that using RHS rule that is right angle hypotenuse and rule we can say that these two triangles will be congruent triangles triangle PEA is congruent to triangle PEB triangle congruent ये रहेंगे आपके congruent triangles so just using CT corresponding parts of congruent triangle we have proved here AE equals to EB AEB सेम मिल रहा था जहाँ पे A dash E dash भी ऐसे आपके linear points थे as AE equals to EB it means that E is working as a midpoint of that segment AB okay मैंने जो आपको बोला ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में रह सकते हैं इस टाइप के कई ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं the radius of the circle with center P the radius of the circle with center P is 25 centimeter and the length of the chord is 48 length of the chord AB is 48 then find the distance of the chord from the center P find the distance of the chord from the center P is sir see आपके पास क्या है सबसे पहले ये चेक करो in a circle with center P PM is perpendicular to AB given part है समझ में आ रहा है क्लियरली डायग्राम से ही PM perpendicular to AB and we have radius is given as a 25 hence AP or PA equals to 25 as well as we have the length of chord as well that is
AB equals to 48 centimeter. AB equals to 48 centimeter. So find करना है what will be the value of PM. What will be the value of PM? So we know that perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. मतलब ये जो point है जहाँ पे आपने perpendicular draw किया था, that end point will work as a midpoint for this segment, as PM is perpendicular to AB. Using the first Z, आप क्या बोल सकते हो? Perpendicular drawn from the center to the circle bisects the chord. So we can say that AM is nothing but half of AB. AM is nothing but half of AB, and AB is given as a 48. So AM will be 24 centimeter. AM will be 24 centimeter. So now just consider about this triangle PFA जहाँ पे आपको measure of angle A मिल रहा था 90, मतलब आपके पास right angle triangle है, right angle triangle रहता है तो फिर आप hypotenuse square is equal to first side square plus second side square बोल सकते हो using Pythagoras theorem. So 25 square equals to PM square plus 24 square, that is PM square will be 625 minus 576, which is nothing but 40, and PM square is equal to 49. Hence, considering square root on both sides, you will get PM as a 7. That is, the distance of the chord from the center P will be 7 cm. Distance of the chord AB from the center P is 7 cm. Done with this? समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा? क्लियर हो रहा था ये? Again, see, even part is AP equals to 34, AM equals to 30, AP is 34, AM is equal to 30. Hello Rajesh, hi. As AM is perpendicular to PQ, then find the length of PQ. मतलब again आपको same use करना है. Theorem क्या था आपका? अगर आप center से chord पे perpendicular draw करोगे at 10, then that point will work as a midpoint. The perpendicular will bisect the chord. So question क्या है के पास है? सबसे पहले नोट डाउन करो. AP is 34, AM is 30, and given case is that AM is perpendicular to PQ. So if we'll just talk about the right angle triangle AMP, right angle triangle AMP, as AMP is a 90 degree, hence hypotenuse, that is side opposite to the 90 degree, 34 square equals to AM square plus PM square. So 34 square equals to 30 square plus PM square. यहाँ पे एक और वे आप यूज कर सकते हो. देखो आपको PM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? सो वी कैन से दैट PM square equals to 34 square minus 30 square. Getting this one? 34 square minus 30 square. You may find it easy because यहाँ पे सिर्फ आपको यूज करना था a square minus b square का फॉर्मूला. A square minus b square is given as a plus b into a minus b. Means instead of finding out what will be square of 34, what will be square of 30, again आप वो subtract करोगे. Instead of that, a square minus b square की जगह पे आप a plus b into a minus b भी यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे a का वैल्यू रहेगा 34, b का वैल्यू रहेगा 30. We can write it as 34 plus 30 into 34 minus 30. ट्रिक समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? सो आपको सिर्फ पे यूज करना है 64 into 64 into 4, which is nothing but यहाँ से ही समझ में आ रहा था 64 is nothing but 16 4 is into 4. तो अगर PM स्क्वायर आपको 16 into 16 मिलता है तो PM का वैल्यू आपका 16 रहेगा. It's quite easy as that.
अदरवाइज यहाँ पे जो आपको मिल रहा था स्क्वायर कंसीडर करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, देन अगेन इसका स्क्वायर निकालो, ये भी कर सकते हो। पीएम का वैल्यू आपको 16 मिलेगा, बट फाइंड आउट करना था आपको वैल्यू पीक्यू का। आपको क्या पता होता है दैट एम विल वर्क एज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, करेक्ट? समझ में आ रही है? बोल सकते हो पीक्यू का वैल्यू क्या रहेगा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पीक्यू। पीएम अगर 16 रहता है देन पीक्यू इज नथिंग बट डबल ऑफ इट, करेक्ट? पीक्यू इज नथिंग बट डबल ऑफ इट व्हिच इज नथिंग बट 32 units. यूनिट कुछ दिया नहीं था आपको, so just consider as a 32 units. Getting this one clear हो रहा है क्या बोल रही हूँ? Should we go on for the next question? Length of PQ will be 32 units here. Again there is a one more type of question. अभी यहाँ पे आपको chord दिया था and distance दिया, and you have to find radius of the circle. I think easily कर पाओगे आप। बोलो आंसर क्या रहेगा? अदरवाइज आप सेम ही वैल्यूज करोगे, जस्ट आपको वो थ्योरम यूज करना है। यूजिंग दैट थ्योरम आप क्या बोल सकते हो दैट m will work as a midpoint here. Given points क्या थे? OM perpendicular to AB, AB that is length of segment is given as 30 and OM is equal to 8. We know that AM equals to half of AB because perpendicular is drawn from the center of the circle to the chord by the chord. देखो जिस थ्योरम के लिए, जिस रिजल्ट के लिए डायरेक्टली आपके पास प्रॉपर नेम रहता है तो आप यूजिंग दैट थ्योरम ऐसे लिख सकते हो, जैसे हम पाइथागोरस के लिए लिखते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए कुछ नेम नहीं है, तो आपको ये पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना पड़ेगा। ओके, as perpendicularly drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. तो अगर AM का वैल्यू आपका रहता है 30, A B का वैल्यू रहता है 30, then AM will be 15 centimeter. So now just go with this right angle triangle. इस right angle triangle में AM आपको मिल रहा था 15, OM आपको मिल रहा था 8. So OA square equals to OM square plus AM square, that is 8 square plus 15 square, which is nothing but OA square will be 289. So just square root consider the OA का वैल्यू आपको मिल जाएगा, and OA is nothing but radius to the circle. देखो क्या मिलता है? What will be square root of 289? Yes, let me know in the chat box what is the square root of 289. Correct. Hence, OA will be 17 centimeter. OA will be 17 centimeter. Hence, radius of the circle will be good, Rajesh, very good. Hence, radius of the circle will be 17 centimeter. क्लियर हो रहा था? थ्योरम क्या है समझ में आ रहा है? उस थ्योरम रिलेटेड हमने ये जो भी कुछ 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, गेटिंग दिस वन। ओके, विल जस्ट गो थ्रू द अनदर थ्योरम। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो थ्योरम आप यूज करने वाले थे सिर्फ आप उसका इनवर्स यूज कर रहे हो। The segment joining midpoint of a chord and the center of the circle is perpendicular to the chord. The segment joining midpoint of the chord and center of a chord is perpendicular to the chord. जो वे आपने यूज किया था सिर्फ आपको अज्यूम करना है उसका इनवर्स पार्ट। एंड मैंने क्या बोला है, यूजुअली जो भी कॉर्ड एंड सर्कल से रिलेटेड आपके पास रिजल्ट्स आते हैं सारे क्वेश्चंस आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार ट्रायंगल आपको मिला तो ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंस से चेक करो, एंड आफ्टर दैट यूजिंग सिंपलिसिटी केस आप बोल सकते हो कि एक्चुअल में आपको प्रूव किया था। यहाँ पे given का देखो we have a circle with center P, M will be midpoint of CD, it means that CM equals to MD, या बोल सकते हो
we have to prove that PM is perpendicular to CD. आपको perpendicular है ये prove करना है मतलब 90 डिग्री है ये सिर्फ आपको पे दिखना है okay. First thing you will do, we'll just draw the construction. P, C and PB आप करोगे join. So are you able to see there are two triangles? ऐसे two triangles आपके पास है जहाँ की साइड्स के बारे में आप कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हो. PC, PB आ गई है of the same circle. PM is nothing but the common side and CM and MB पहले से आपको पता है that it will be equal to the length. Okay, so we'll start the action. In triangle PMC and PMB, in triangle PMC and PMB, PM equals to PM because it is a common side. Next is CM equals to MB, CM equals to M because M is a midpoint of CD. And third case is that PC equals to PD as those two are radii of the same circle. So side, side, side. It means that using SSS criteria, you will get that triangle PMC is congruent to triangle PMD. Triangle PMC is congruent to triangle PMD. Okay. So if it is a case, if you have two congruent triangles, then आप क्या बोल सकते हो? देखो measure of angle PMC equals to PMD because it is nothing but CPCT corresponding parts of the congruent triangle. But आपको प्रूव करना था perpendicular है मतलब ये जो equal है आप बोल रहे हो आपको 90 डिग्री से assume करना होगा. We know that these two are linear angles. These two are in a pair of linear angles. So PMC plus PMB आपको 180 मिलेगा. मतलब 2 times PMC कुछ आपका रहेगा 180. Then value of PMC will be 90. अगर PMC 90 मिलता है, then definitely PMD भी आपको 90 ही मिलेगा. Correct? Once you will this one, it means that PM is perpendicular to C. दोनों भी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको प्रूफ करना है तो जैसे मैंने आपको बोला है सिर्फ जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगल में कन्वर्ट करो. वंस यू विल जस्ट दिस वन देन आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल का यूज करना है. उसके बाद सिंप्लिसिटी का यूज करके आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए पाइथागोरस का यूज करना पड़ता है. ओके सी we have something like this. In a circle with center P, chord AB is smaller than sum of the side PA and PB by 2. मतलब डायरेक्टली आपको क्या लेंथ रहेगी ये नहीं बोला था. डायरेक्टली आपको क्या रेडियस रहेगा सर्कल का ये भी नहीं बोला था. But you have one condition that chord AB is smaller than PA and PB by 4 centimeter. If the perimeter of PAB, if the perimeter of PAB is 144 centimeter, then find the length of PM. मतलब chord की सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा ये आपको फाइंड आउट करना था. गेटिंग दिस वन? क्या बोल सकते हो आप? chord AB है आपको PM फाइंड आउट करना है. we know that P is smaller than, it means that आपको चेक करना है smaller than. इसके लिए हमने -4 लिखा. sum of PA and PB, so sum of के लिए addition PAB यहाँ पे आप करोगे addition. AB equals to PA plus PB -4. But we know that PA and PB are nothing but same radii of circle, radii of the same circle. So you can replace PA by PB or PB by PA. It will be same. Suppose वो हम assume करते हैं x रहेगा. Then we can say that AB equals to twice x minus 4. AB equals to twice x minus 4. Then now next case. What is the perimeter of the triangle? Perimeter of the triangle is nothing but sum of all sides. Sum of all sides. Hence perimeter of the triangle PAB equals to क्या PA plus PB plus AB.
is given as a 144. PA plus PB plus AB is given as a 144. But PA is nothing but X, PB is nothing but X and AB का value in terms of X just हमने क्या लिखा है 2x minus 4. 2x minus 4. So after simplifying this, you will get 4x as the 144 plus 4, which is nothing but 4x is equal to 148. That is, value of x will be 37 centimeter. Value of x मतलब रेडियस की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 37. आपको फाइंड आउट करना है pm मतलब अगेन वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके बोल सकते हैं. As the radius is 37, so what will the value of this chord? Length of chord is twice x minus 4. That is 2 times 37 minus 4. So value of AB will be 70. AB का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 70. बट यहाँ पे चाहिए अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है तो सिर्फ हाफ ऑफ दिस. अगर AB रहता है 70 then AM is nothing but 35, right? Because perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord, right? So as AB equals to 70, we know that PM is perpendicular to AB, therefore AM will be 35. Now we'll just discuss about this right angle triangle. In right angle triangle PAM, क्या आपके पास है देखो hypotenuse is 37, so 37 square equals to PM square plus 35 square. देखो A minus B, A plus B, इस वजह से अभी हमने किया है ये सब. Okay, so A square minus B square is nothing but A plus B into A minus B. Therefore, PM square will be 37 plus 35 will give you answer 72 into 37 minus 35, which is nothing but twice. Therefore, PM square equals to 144. PM square is equal to 144. But आपको सिर्फ PM की वैल्यू चाहिए. It means that we have to consider square root on both sides. So taking square roots on both sides, you will get PM as a 12 centimeter. You will get PM as a 12 centimeter. Getting this one? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? Okay, then see. Next one. Converse of a theorem of a Pythagoras. आपने अब तक पाइथागोरस थ्योरम देखा था. कॉन्वर्स का मतलब क्या है? इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equals to sum of the squares of remaining two sides, then we can say that the triangle is a right angle triangle. Suppose AC square आपको कुछ ऐसा मिल रहा था that it is sum of squares of remaining two sides, that is AC square is equal to AB square plus BC square. अगर ऐसा कुछ रहता है तो आप क्या बोल सकते हो? ट्रायंगल ABC is a right angle triangle. ये wrong solution. Okay, just to go with this. Two radii of 5 centimeter, 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their circles is 4. Then find the length of common chord. ये wrong. Just हम क्यों wrong है ये डिस्टेंस ऑफ मीटर ये कुछ 4 आपको दिया था. तो फिर अगर आपको फाइंड आउट करना है कॉमन कॉर्ड मतलब जो दोनों के बीच में आपको मिलेगा, इसके लिए क्यू आर ये कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है. मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने वाला है वो आपको चाहिए था. बट फॉर दैट जो भी आप कुछ यूज करोगे केसेस वो साइमल्टेनियसली सिंगल केस के लिए आप कर सकते हो, राइट? जस्ट give you one more case here. जो वे आप यूज कर रहे हो वहां पे only one thing, what should you actually do here? Two radius intersect at 2 points Q and R.
distance between their center is given as a 4 centimeter. मतलब ये रहेगा 5 centimeter, ये रहेगा 6 centimeter, and value of this OP will be 4 centimeter. Then you have to find the value of length of common point. QR क्या रहेगा ये आपको find out करना था. What is the even part? आपको क्या पता है? Segment joining centers of two intersecting circles is always perpendicular bisector of the common point. ये हमेशा perpendicular bisector रहेगा. ठीक है? मतलब क्यू एम एंड एन आर आपको सेम मिलेगा, तो सिर्फ क्यू एम फाइंड आउट करो, ये आपको इजीली मिल जाएगा. गेटिंग दिस वन? सी एज ओ क्यू इज द लार्जेस्ट साइड, आप क्या कंसीडर कर सकते हो? इट विल बी अ हाइपोटेन्यूज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर which is nothing but 25. Now PQ square plus OP square. PQ square plus OP square. क्या मिलेगा आपको? 3 square plus 4 square which is nothing but 25. So using converse of Pythagoras theorem, what can you say will be a 90 degree? मतलब ये जो Q एंगल आपको मिल रहा था, it will be of 90 degree. कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं? क्लियर हो रहा था आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 90 डिग्री का. सो वी कैन से दैट क्यू एंड नॉट द केस, देयरफॉर क्यू पी आर शुड बी लिनियर, इट शुड बी कोलिनियर. मतलब ये क्वेश्चन कुछ आपका इस वे से मिलेगा. ये जो P आप कंसीडर करने वाले थे ये सही दिखाई देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर था. 5 सेंटीमीटर शुड बी द ग्रेटर वन, राइट? As PQ is nothing but radius of this smaller circle जो 3 सेंटीमीटर आपको मिल रहा था. अगर QR फाइंड आउट करना है, QR is nothing but 2 times of QP, that is 2 times of 3. So answer of QR will be 6 centimeter. Answer of QR will be 6 centimeter. Done up to this? ओके. सो आज के लेक्चर में जो हमने ये 4 थ्योरम्स देखे हैं, यूजुअल पॉइंट का केस रहेगा, जो भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, स्पेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एल्जेब्रा थ्योरम भी आपको पूछा जाता है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू तो डेफिनेटली. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट इजीली. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क एनी टाइम. बट दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. नेक्स्ट सेशन हमारा ट्यूसडे को रहने वाला है, तब हम सर्कल के और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो सब चेक करेंगे. ओके, सी बाय बाय.